Hello, good evening dear students. This is Sonia Kaushik and today we are going to discuss important diagrams from chapter Organism and Population, chapter number 13 from class 12th biology, and these diagrams are important for your board exam as well as for your NEET exam. चलिए start करते हैं students. So this is first diagram. In this diagram we can see different biomes present all over the world. Like you can see different types of biomes like desert, grassland, desert, grassland, tropical forest, temperate forest, coniferous forest, आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा. ठीक है, तो बेटा डिफरेंट टाइप्स के क्योंकि यहाँ पे जोग्राफिकल रीजन्स प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप्स के बायोम्स है, इसीलिए इतनी ज़्यादा वेरिएशंस आपको देखने को मिलती है वेदर इट इज़ इन प्लांट्स और एनिमल्स. So my dear students, this is the reason that on our earth we have millions of different species of different organisms, that is due to different types of biomes. Like in desert, high temperature will be there and organisms are adapted to that environment, and only that type of organism that can tolerate that high temperature, they are present in deserts. And in grassland there are no you can say a large number of trees, only small trees or bushes like and structures are present in grassland. So the type of organism adapted there, they are according to their environment, or you can say that grassland. And if we talk about tropical rainforest, so that have a favorable environment and have a good diversity of both plants and animals. In temperate forest generally temperature is high, so the plants and animals that can tolerate that temperature, that is maybe above 40 like that, so that can survive. In coniferous forest they are having like evergreen trees and evergreen plants are present, and they have a dense canopy. And in Arctic and alpine tundra, because they are permafrost area, so the plants or the animals that can survive in these extreme conditions are present in these. So these are the major biomes. These are 6 in number, that is present all over the world. But if we talk about India, in India major biomes are tropical rainforest. This is tropical rainforest, deciduous forest, desert एंड सी कोस्ट. ठीक है, सी कोस्ट जो समुद्र के तटीय इलाके होते हैं उनको बोलते हैं बेटा. एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दैट हैव अ हाई रेनफॉल, डेसिडुअस फॉरेस्ट दैट द ट्रीज कैन शेड देयर लीव्स इन ऑटम सीजन, एंड डेजर्ट xerophytic plants and the plants that are adapted to water scarcity that are present here. And whatever the type of vegetation present in any area, तो उसी अकॉर्डिंग वहाँ पे एनिमल्स भी प्रेजेंट होंगे, राइट. So these 4 major biomes are present in India. Next, coming to this diagram, this is very important. This is how the organism behave or adapted to behave to different stress conditions. Like some organism that can tolerate every type of condition, every type of temperature, whatever climatic changes are there, they can maintain that. So that type of organisms are called regulate. Like birds and mammals, they have a fixed body temperature, और दे कैन मेंटेन देयर इंटरनल स्टेट, जिसको हम होम्योस्टेसिस भी बोलते हैं. एंड दे हैव अ वेरी गुड प्रोसेस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ balance between water and ions in the body. So regulators are the organism that can maintain their internal environment as well. But the organism that cannot maintain their internal environment as compared to outer one, if outer the temperature is high, the temperature inside their body will also rises. If outside temperature will be low, the body will have automatically low temperature. So these type of organism that cannot maintain their internal body state, constant internal body state, they are called conformers. And some organism that have different mechanisms to get rid of these unfavorable environmental condition. Like organism can migrate to different area. Some organisms like zooplankton, they undergo inactive state, that is diapause. And in some organisms you can see they undergo winter sleep, that is hibernation, and some go summer sleep, that is estivation, right. So these type of organism that can partially regulate them according to external environment, these are partial regulators. Okay,
So these are the organismic response to abiotic factors. नेक्स्ट दिस डायग्राम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज़ रिलेटेड टू एज पिरामिड. बेटा अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, ठीक है, पॉपुलेशन यू नो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ you can say individuals of the same type that have that can that shares the same geographical area, that uses same resources and that can interbreed among themselves. Okay, that can undergo mating. तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम पॉपुलेशन बोलते हैं. तो ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें बेटा, सो वी आर डिवाइडिंग द individuals in 3 different age groups: pre-reproductive age, that is below 15, and reproductive age, that is above 15, and post-reproductive age, you can say when when the individual is not having ability of producing young ones, that in the late stage of their life or old age, you can say. ठीक है. तो अगर बेटा किसी भी पॉपुलेशन में एक्सपेंडिंग कर्व अगर आपको देखना है, या एक्सपेंडिंग पिरामिड की हम बात करें, तो ऐसा कब होगा जब प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स ज़्यादा है, पोस्ट के कम हैं. In this diagram, you can see the individuals of pre-reproductive age are more in number, and post-reproductive age are less in number. So in future, as pre-reproductive age group individuals are more, यहाँ पे कम एज के लोग जो है ज़्यादा हैं, और आने वाले समय में ये पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी. और अगर हम इसकी शेप की बात करें बेटा, क्योंकि ये इंक्रीज़ होगी इसलिए इसको एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन हम कहेंगे, और इसकी शेप की बात करें तो ट्रायंगुलर शेप इसको कहेंगे. नेक्स्ट देखिए, दिस वन इज स्टेबल. व्हेन यू सी द ऑर्गेनिज्म और द इंडिविजुअल्स इन प्री रिप्रोडक्टिव आर ऑलमोस्ट सिमिलर, एंड दे आर लेस इन पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज. So in the near future the population will not rise, ना तो बढ़ेगी ना ही कम होगी. तो that type of population is called stable. कि stable रहेगी, ना increase होगी ना ही decrease होगी. and the shape will be, shape कैसा होगा बेटा, this is bell shape. ठीक है, this is bell shape. Okay, that is broader in the base and narrow in the anterior end, right? Next we are coming to, if the individuals in pre-reproductive age are less in number, कम होंगे, and reproductive में ज़्यादा होंगे, and again less in post-reproductive. So this type of growth curves will be declining. That means आने वाले समय में population decrease होगी. and इस shape को हम क्या कहेंगे, this is urn shape, right? So 3 type of age pyramids are expanding, stable and declining. Expanding will have triangular shape, stable will have bell shape, and declining population will have urn shape. Sometimes these shapes they can ask in NEET exam. Again this figure is important. If you see population density can be defined as the number of individual per unit area. ठीक है, किसी भी एरिया में अगर हम एरिया वाइज कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल in a 10 kilometer area there are 100%, in another 10 kilometer area they are only 50%. So you can see the area that have more number of individuals that have more population density, and the area that have less number of individuals that have a less population density. And population density can be represented by n. So my dear students, अगर बर्थ होंगे, अगर न्यू बर्थ होंगे, न्यू इंडिविजुअल्स विल टेक बर्थ, तो population density क्या होगी, increase होगी. Similarly, if some more individuals of same species come in a geographical area from any other area, so that is immigration, और इस केस में भी population density increase होगी. तो वी कैन से कि जब इंडिविजुअल्स कहीं बाहर के एरिया से उस एरिया में एंटर कर रहे हैं, या नए बर्थ हो रहे हैं, नए जन्म हो रहे हैं, देन population density will increase. And what are the reasons that decreases the population density? So you can see mortality, that is death rate. ठीक है, कितने ज़्यादा डेथ हुए हैं, एंड एमिग्रेशन, कितने ज़्यादा इंडिविजुअल वहाँ से किसी और जोग्राफिकल एरिया में माइग्रेट कर गए, दैट इज़ एमिग्रेशन. सो बोथ विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन पॉपुलेशन डेंसिटी. तो पॉपुलेशन डेंसिटी मोर्टेलिटी और एमिग्रेशन की वजह से डिक्रीज होगी. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट पॉजिटिव इम्पैक्ट, सो बर्थ रेट एंड इमिग्रेशन विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द पॉपुलेशन डेंसिटी. नेक्स्ट दिस डायग्राम इज अगेन इम्पॉर्टेंट. दिस इज रिलेटेड टू ग्रोथ कर्व. ठीक है, ग्रोथ कर्व. अब आपको यहाँ पे 2 ग्रोथ कर्व दिखाई दे रहे हैं. दिस इज जे शेप ग्रोथ कर्व एंड दिस इज एस शेप.
एस शेप इज ऑल्सो कॉल्ड सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व, सिग्मोइडल, ठीक है, सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व. सो दिस एस शेप कब होगी बेटा? व्हेन रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड. जब रिसोर्सेज, व्हेन रिसोर्सेज कैसे होंगे, सॉरी, व्हेन रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, व्हेन रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, अनलिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, अनलिमिटेड रिसोर्सेज होंगे तो ग्रोथ कर्व कैसा होगा? जे, ठीक है, जे शेप. क्योंकि इंडिविजुअल्स की ग्रोथ एक बार इंक्रीज होना स्टार्ट होगी एंड इट विल continue to rise. So this type of growth curve is J shape. Next we are coming to S shape growth curve. In this curve you can see the population of the organism will stabilize initially in a new environment, then they will start rising, population increase होगी and ग्रोथ की बात करें, पहले ऑर्गेनिज्म, किसी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म जब किसी नए एनवायरनमेंट में आता है, इट विल स्टार्ट अडेप्टिंग इन दैट न्यू एनवायरनमेंट. So this is lag phase, that you can say that adaptability time or adaptation जिसमें वो करेगा, that is lag phase. Then growth phase is called log phase, and ultimately there will be a stationary state, that is declining phase. So this growth curve is also called logistic growth curve or S-shaped growth curve, and first one is called exponential growth curve. So if we talk about population density, so in J-shaped growth curve, it is equals dn by dt equals to rn. What is r here? R is the intrinsic rate of natural increase. इंट्रिंसिक रेट का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म खुद से कितना मतलब अपना नंबर को इंक्रीज कर रहा है, या क्योंकि रिप्रोडक्टिवली जितना वो फिट होगा. इफ़ वी टॉक अबाउट रिप्रोडक्टिव फिटनेस दैट इज़ गिवन बाय डार्विन, सो दैट इज़ समथिंग इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज. and t is population density at time t and 0 population density at time 0. So they can ask when resources are unlimited, J shape growth curve will be there, and when resources are limited, S shape growth curve will be there. Next, this figure is very important for board as well as for NEET. Population interaction. Yes, you know, different types of populations are there in a community, so they may have a positive impact on each other, they have a negative impact and they have a neutral impact. तो पॉजिटिव को बेनिफिशियल इंटरेक्शन कहेंगे, नेगेटिव को हम डेट्रीमेंटल इंटरेक्शन कहेंगे, एंड द इंटरेक्शन इन विच वन ऑर्गेनिज्म is neither benefited nor harmed, that is called neutral. So this is the first case, mutualism, in which both the species get benefit, जिसमें दोनों स्पीशीज़ को बेनिफिट हो रहा है. जैसे लाइकेन में एल्गी एंड फंजाई, दोनों को फ़ायदा एक दूसरे के साथ रहने में. माइकोराइजा एक एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, इन विच बोथ द हायर रूट्स ऑफ हायर प्लांट एंड फंजाई बोथ गेट बेनिफिट, दैट इज म्यूचुअलिज्म. इफ बोथ ऑर्गेनिज्म गेट हार्म फ्रॉम ईच अदर, लाइक lion and tiger, if they have to eat goat, so both have to compete for goat. So both have if one will take it, other will have a negative impact, or you can say other will not get food at that time. So both are strong competitors, right? If we talk about predation, so that is something prey and predator relationship. शिकारी और शिकार वाली बात करेंगे. goat and lion का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं. goat having negative impact and lion having a positive impact. नेक्स्ट वी आर कमिंग टू पैरासिटिज्म. पैरासिटिज्म आपको पता बेटा, द ऑर्गेनिज्म दैट यूटिलाइज द बॉडी ऑफ होस्ट एज अ फूड एंड शेल्टर, दैट आर कॉल्ड पैरासाइट. दे मे बी एक्टोपैरासाइट, दे मे बी एंडोपैरासाइट. बॉडी के बाहर हैं तो एक्टोपैरासाइट, अंदर है तो एंडोपैरासाइट उसको हम बोलेंगे, ठीक है. सो पैरासाइट में क्या होगा बेटा, होस्ट विल गेट हैविंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट, होस्ट विल गेट हार्म्ड एंड द पैरासाइट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, बिकॉज पैरासाइट इज गेटिंग food and shelter from host, right? Next we are coming to next type of interaction, that is commensalism, in which one organism get benefit and other is neither harmed nor get benefit. So that is the case of, you can say, a small sucker fish on a large fish that is taking protection and that is taking food as the large fish goes to new area, or you can say a new वाटरिज्म, तो उसको वहाँ पे फूड. और आप सी एनिमोन का और फिश का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, सकर फिश का.
ठीक है, दैट बड़ी फिश को कोई फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं है, बट दैट या स्मॉल फिश को वहाँ पे फ़ायदा हो रहा है, दैट इज़ हैविंग इंटरेक्शन विद सी एनिमोन, क्योंकि सी एनिमोन हैव टेंटाकल्स दैट आर डिफेंसिव इन नेचर, ठीक है, क्योंकि दैट हैव स्पेशल टाइप ऑफ स्टिंगिंग सेल इन दैम, सो बट सी एनिमोन डजंट हैव एनी इफेक्ट फ्रॉम दैट स्मॉल फिश, ठीक है। नेक्स्ट इज एमेंसिलिज्म। एमेंसिलिज्म में क्या होगा, वन ऑर्गेनिज्म विल गेट नो नॉर बेनिफिट और नॉट हार्म्ड, बट अदर विल गेट हार्म्ड, सो दिस इज द केस ऑफ एमेंसिलिज्म। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। वी हैव अ बैक्टीरिया like E. coli. E. coli have a plasmid that is called, E. coli have a plasmid that is coal plasmid, and this coal plasmid will release some chemical that is colicin, that is colicin, and this colicin will inhibit the growth of other organism in the growth medium. So wherever this bacteria that having coal plasmid that is present, other bacteria or other microorganism cannot grow. So it doesn't have any impact on E. coli, but the organism whose growth is inhibited that get harmed from this type of interaction. So this is emensilism. So all these diagrams are very important if we are preparing for NEET, if we are preparing for CBSE, right? This is the mutual relationship. This is the case of co-evolution and mutual relationship again between the fig flower and wasp. Okay, so wasp will lay egg in the fig fruit, and the larva will take nutrition for growth from the fig fruit, and in return the flower will get pollinated. फ्लावर को पॉलिनेशन का फ़ायदा होगा यहाँ पे, एंड वास्प को क्या होगा, स्पेस मिल जाएगा, उसको एग लेइंग के लिए स्पेस मिल जाएगा, और लार्वा के लिए न्यूट्रिशन मिल जाएगा। लार्वा के लिए उसको क्या मिल जाएगा, न्यूट्रिशन। सो and both are interdependent, we can say both are depend on each other for their completing their life cycle. Fig flower require wasp for pollination, and wasp require fig fruit for their egg laying or oviposition, and for nutrition to their developing larva. So this is the case of co-evolution. And if one of them is extinct, the other will automatically extinct, ठीक है। अगर एक एलिमिनेट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो दूसरा भी अपने आप ख़त्म हो जाएगा, दैट इज डिपेंडेंट। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द केस ऑफ सेक्सुअल डिसीट इन विच देर इज़ अ नेचुरल मेथड टू प्रिवेंट अनवांटेड पॉलिनेटर्स टू कम ऑन द फ्लावर। इस फ्लावर में बेटा आप देखेंगे दैट आर ऑर्किड फ्लावर, दिस इज ऑर्किड फ्लावर, and in this you can see one petal will resemble female bee in their color and marking. Okay, so one petal will resemble, this is actually a petal, but it resembles female bee. So what happens, male bee come here and start pseudocopulation, and in the case of pseudocopulating, it in turn pollinate the flower of that orchid, right? So we can see this is the pseudocopulation process, and male bee को यहाँ पे भ्रम हो गया है, and male bee is having a confusion that this may be a female, because one petal resembles to exactly to the female bee, right, in color and marking. So all these diagrams are very, very important if you are preparing for NEET. Whatever diagrams, whatever examples given in your NCERT, so do prepare them. And if you are going for any competitive exam, so you should have a look on these diagrams, right? So this is all about today. Goodbye everyone.